And I think we're live on YouTube. आप सबको नोटिफिकेशन आया ना कि क्लास स्टार्ट हुआ है, स्पेशली पीपल हु आर देयर ऑन थिंकिंग ब्रिज ऐप, आपको नोटिफिकेशन आया है? प्लीज कंफर्म मी. हाय विजेता. हाँ जी. Sushmita couldn't attend the last session. No worries, Sushmita. Usme that session was primarily focused on career guidance, wherein we were discussing about different doubts student had. Some have some had qualified CA, some had cleared CA intermediate. So all sorts of things. Those Q&A session was there. It was an open house session. Everybody was free to ask any doubt, and the इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स वर देयर टू गाइड. तो वो वही हुआ था थिंकिंग ब्रिज के लास्ट सेशन पर. ज्यादा कुछ हुआ नहीं था. Will we have a Q&A session for this session? Yes, we can definitely have. If you have any specific doubt, तो आप पूछ सकते हो अभी भी, ईवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, before we start the session. But this message is specifically for people who want to understand what are we going to do in today's live session. So hi YouTube. YouTube की जनता को भी hello है मेरा. I think we're finally live on YouTube. And अभी जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, अपना अपना YouTube ऐप ओपन करके लाइक कर दो. लाइक का रेशियो हमारा एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है, और वो है YouTube का लाइक. ठीक है ना? सो वो लाइक जो है साथ के साथ देते हुए चलने का. जैसे आते ही भगवान के यहाँ पे प्रसाद लेके आते हैं, ऐसे ही थिंकिंग विश्व लाइव सेशन में आने का चढ़ावा है लाइक देने का. ठीक है, दैट्स ऑल. सो डाउट्स स्टार्ट ड्रॉपिंग इन. कोई बात नहीं, हम अभी डिस्कस करते हैं. आयुषी. हाँ जी, तो मैं बताने वाली हूँ कि आज का सेशन क्या बारे में है. सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक इंटरव्यूज, राइट? If you people are interested to know few insights about how to go about interview, then we can discuss that. Otherwise, I will be more than interested in taking a few mock interviews here. तो पहले अपनी पर्ची कटवा दीजिए कौन कौन इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड है. जैसे हम कभी डॉक्टर के वहां पे जाते हैं तो पर्ची कटवा देते हैं ना कि हाँ हमारा नाम लिख लीजिए, हम जब हमारा नंबर आएगा हम आ जाएंगे लाइव सेशन में डॉक्टर के पास, राइट? सो लाइकवाइज जिसको आज जाना है, मॉक इंटरव्यू देना है, जिसको भी जो इंटरेस्टेड है, और तो वो अपना नाम जो है लिख सकते हैं. विजेता का नाम आ चुका है, अमन का नाम आ चुका है. वेरी वेरी गुड. तो मॉक इंटरव्यूज देना क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें ऐसा लगता है कि जब हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है हम तो एकदम टॉप चीज है, हमारा तो इंटरव्यू एकदम स्मूथ जाने वाला है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है, या फिर चलो 2 भी लग गए बट मेरे को तो सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, मतलब मैं तो एकदम टिप टॉप हूँ, राइट? But reality will hit in when you will give your life's first interview, and especially after becoming chartered accountant. और अगर आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं तो भी लाइफ का फर्स्ट प्रैक्टिकल रियल इंटरव्यू देना कैन बी वेरी वेरी जिटरी, और बहुत बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है वो, राइट? सो आप अपने प्रैक्टिकल फाइनल वाले इंटरव्यू सेशन में कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसी के लिए हमारे ये मॉक इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते हैं. और मॉक इंटरव्यूज के थ्रू हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप अपने फाइनल इंटरव्यू सेशन में बहुत स्मूथली परफॉर्म करें. और इंटरव्यू देते इसलिए ना ताकि सिलेक्शन हो जाए, एंड यस, ताकि सिलेक्शन हो जाए. सो how do we conduct these mock interview sessions? So mock interview session may be people volunteer, whosoever is interested in giving a mock interview. And then after that we kick off, right? And I ask a couple of questions here and there, HR round ke bhi, technical round ke bhi, both including. And then towards the end, I give them feedback. People who have, who have volunteered to give the interview, then I give feedback towards the end. And feedback may I focus on couple of things. Number one, definitely your communication skills, how you're presenting.
right? And secondly, the way how confident you are and your technical knowledge, right? So technical knowledge, your confidence, your communication skills, I think these are the very important parameters when you're preparing for an interview, when you're appearing for an interview. So इन्हीं पैरामीटर्स पर हमें काम भी करना है. So today is the chance for everybody जिनके भी upcoming अभी interviews होने वाले हैं. This is your chance to go ahead and practice beforehand and take I'm calling myself expert, but take feedback from people who've been there, done that. So I hope you guys know me, but for those who don't know me, hi, I am Pooja Sharma. I'm one of the co-founders of Thinking Bridge. And we are into providing technical training for people in finance who want to make a career in finance. And we help them land their dream jobs in one of the top corporates and big fours included. As for me, I also come from a chartered accountancy background, not a CA yet, but I do come from chartered accountancy background. I have also done my master's in business entrepreneurship. And I've been training people for group discussions and interviews for the past couple of years. I think for the past 5 to 6 years, at least. So I've done and delivered a lot of GD trainings, a lot of interview trainings. So I believe using all of that experience, I'd be able to help you out. Other than that, in terms of our startup Thinking Bridge, I also take care of marketing, operations, basically strategy and everything. So I also take interviews now and then for my team, right? So I believe I will be able to help you out in preparing for your upcoming interview and give you valuable insights that will help you not only improve your answers, but also to perform better in your interview, right? And on that note, let's start with today's session. I think we'll kick off with the mock interview session first. So Vijayta, are you ready? चलो, तो जो लोग ज्वाइन इन करते जा रहे हैं उनके लिए भी एक हेड्स अप, एक छोटा सा हेड्स अप ये है कि आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं मॉक इंटरव्यू देने में, प्लीज अपना हैंड जो है रेज कर दीजिए और उसको रेज कर ही रखना, सो दैट आई कैन कम टू यू एंड आई कैन अनम्यूट एंड देन वी कैन स्टार्ट द इंटरव्यू. Hi, Lucky. I think you were there in one of the previous live sessions also, if I'm not wrong. Or is this your first live session? हाँ जी. So I believe विजयता ने सबसे पहले जो है hand raise कर लिया था, तो we are obviously going to go ahead with विजयता. So सबसे पहले बात करते हैं. हाँ जी विजयता, क्या हाल है आपके? अच्छा है मैम, क्लियर हो गए. हाँ जी. तो पहले तो विजयता से जानते, विजयता ये खुशी का राज क्या है? क्या कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ है? पहले तो जानते हैं कि इंटरमीडिएट ग्रुप 2. यू क्लियर्ड ग्रुप 2 ऑफ इंटरमीडिएट और ग्रुप 1 हो चुका है? यस, ग्रुप 1. सो भाई हमारे साथ हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट विजयता सिन्हा, राइट? FCA विजयता सिन्हा. और विजयता सिन्हा यहाँ पर आए हैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए. क्या बात है. विजयता पार्टी करी कि नहीं करी, पहले ये बताओ. यस. लड्डू बंटवाए मोहल्ले में कि नहीं बंटवाए? लड्डू नहीं. यार इंडियन फैमिलीज में लड्डू के बिना कहाँ काम चलता है. लड्डू, काजू की बर्फी, है ना, तो इन सब के बिना तो अपना सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता है. एनीवे, सो विजयता आप कौन सी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है? ऑडिटिंग. ऑडिटिंग में क्या? ऑडिट एश्योरेंस, रिस्क एडवाइजरी? मैम कोई भी फील्ड चलेगा. कोई भी फील्ड चलेगा, बट चलो अभी फिलहाल स्टार्ट ऑडिट पे फोकस करते हैं, ठीक है? एंड कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो? व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी? डिलॉयट में. क्या बात है भाई, डिलॉयट में इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता. आर यू रेडी विजयता? पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है डिलॉयट में जाने के लिए? हाँ, चलो बहुत बढ़िया. हम अभी बस अपना शुरू करते हैं. चलो. So, hi Vijayata, welcome. And how are you doing today? I am fine. Good evening. Vijayata, please introduce yourself. I am Vijayata Sinha from Gujarat. I have cleared intermediate both group and I have scored exemption in 5 subjects.
and I have currently pursuing final year Bachelor in Commerce from VNMH South Gujarat University. I have gained knowledge in field of accounting, auditing, statistics, financial management, economics, and auditing. And I have skills of effective time management and problem solving attitude, and I am very creative, and I am very forward and updated myself, and I love cooking, and I also cooking foods, especially desserts. I like to. All right. Um, Vijayta, my first question to you would be, why did you choose CA? Why CA? Yes. When I have my result of standard 10th come, at that point of time, the decision was whether go for a science, commerce, or arts. Before entering to commerce, I have decided that I want to go for CA. So from that point of time, my dream was CA, to become But CA. there are so many other professional courses which are equally renowned and valuable. Yes. Why not any other course? Um, my first of all, my was to become CA, and in 12th result also, whatever the result comes, I have scored full marks in accounts, and it brings me confidence that I can do it. And I have also passion towards account, and I love accounting. Okay. Could you tell me the general principles of accounts? Yes, general Just principle tell me three general principles of accounting. that consistency and Could you like also explain like in one sentence each yes, principle? yes. Yeah. Consistency, we can see that the for by example, that method of depreciation, we are if a company using in previous year by SLM method, so in the next year or in the upcoming year they have to use straight line method, or if they are not using, they have to disclose this, that they are not using SLM or written down value or any other method. Likewise, for stock valuation, like FIFO method they are using, so they have to disclose if they are not using that FIFO method or any other method like LIFO or weighted average method. So they have to, they are fundamental accounting assumption. So this thing to be done. Okay. Uh, could you repeat the three principles that you just mentioned? Uh, okay. Hmm, I have forgotten. um, Consistency. consistency, and then No worries. Vijayata, why do you want to work with Deloitte? yes, because I want to go for a top firm, and yes, main reason is that Deloitte firm having client that are big clients, and just like Wipro, Maruti Suzuki, listed companies. Especially this thing has my interest towards to go for Deloitte. My first preference is to go Deloitte. But why should we hire you? I mean, I have received at least 100 applications for the same job position that you're applying. What makes you different? Uh, First thing is that I have studied all the theoretical aspect very in deep, that I have given my intermediate growth group individually, that I have focused on subject on every concept deeply. And yes, I'm very hardworking, and I believe that I can work in pressure also very effectively, and I have very time management skill, that I can always do my work and finish my work before it matlab deadline comes to this. So I think that makes me unique from others. Okay. Okay. All right. Can you tell me six steps involved in auditing, like the flow of audit? Yes.
First flow, I that planning, then engagement of the auditor, and then that we can um, that understanding the environment, and understanding the environment of the company, and identifying the risk of material misstatement, and then do substantive procedure, and then we have to make risk assessment procedure, and then reporting. We have to make our opinion and then reporting. Hmm. And Fair yes, enough. in substantive procedure, test of detail and analytical procedure. Okay. Okay. All right. Could you tell me the difference between stat audit and internal audit? Yes. Statutory audit is every company have to do compulsorily, and in internal audit it is optional. It's not compulsory, and it is done by the company for that what are the risks that can be emerged. Okay, then they have to find out all the risk that just like the fraud, like cash manipulation, to detect that fraud initially before it come noticed by the auditor. So we can prevent this. Okay. Okay. All right. Um, could you enlighten me about your strengths and weaknesses? Yes. I think my strength is that I am a very timely person, that I used my time very thinking that what is good, or what that I, even if one day you will say I cannot do with social media, that these are not my weakness. Everybody will have these, so I'm not influenced by this. And my if I say that initially I have a very fear of public speaking, but in my OC batch, that I have a welcome for going to public speak for time management, and I have given speech, and that point of time it gave me very and I have that public speaking, that fear I have overcome that fear. So this point was very That is pretty wonderful. Thank you so much, Vijayata. Do you have any questions for me? not no question. No questions? Okay. All right. But Vijayata, uh, s- हमारे यहाँ पर बहुत काम करवाते हैं and you'll have to, you know, do late sittings and you'd also have to, travel a lot. I hope that won't be a problem with you, Vijayata. I think Vijayata के यहाँ पे I think light चली गई है. I can't see her. Yes, am Vijayata, I can you hear audible? me? Yes, Yes, yes. yes, I was unmuted. Now Your yes, video is not visible. uh, yes, Yes, now you're actually. visible. So I was just asking that, there will be hectic days and you will not get free. You'll have to do late sittings and you'll also have to travel a lot to complete the auditing assignments. So will that be a problem for you? No, no, no problem for that, because while studying also I was doing studying for a lot of time and such a hard working. So I will available, and for traveling purpose I also got this available. Okay, okay. Thank you so much, Vijayata. भाई तालियां बजनी चाहिए. Clapping for Vijayata for showing so much courage and इतने confidence के साथ उन्होंने पूरा interview जो है किया. And obviously she was nervous, it was quite evident, but at the same time you did a great job.
विजेता की मैम वो स्टोरी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहे थे उस पॉइंट पे, नर्वस के चलते। कोई बात नहीं। अरे भाई, हम जब विजय हम एक दूसरे को एनकरेज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे चैट में कोई अच्छा वाहवाही नहीं आ रही है, वेरी गुड जॉब डन विजेता, ये सब चैट में आना चाहिए। यूट्यूब की जनता जो है फिर भी मोटिवेट कर रही है। हमारी जूम की जनता को क्या हो गया? यू गाइस हैव द ऑप्शन टू चैट, राइट? हाँ, ऐसे मोटिवेट करने का। जब कोई इनिशिएटिव लेता है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए उनके एफर्ट्स के लिए। जो उन्होंने जैसा परफॉर्म करा, डेफिनेटली उसके लिए तो हम फीडबैक देंगे ही। काफी अच्छा उन्होंने करा, डेफिनेटली देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, अब आगे देखो, अब आगे है तुम्हारे लिए फीडबैक सब। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। पहले तो विजेता ये बताओ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर दिस इंटरव्यू? वेरी गुड। बहुत नर्वसनेस था, मतलब फर्स्ट टाइम था ना मैम। हाँ। बहुत गलतियां भी की थी मैम। हाँ, तो मतलब खुद को रियलाइज हो रहा है कि थोड़ी गलतियां हो गई हैं मुझसे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, है ना? हाँ। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको अपना इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए। जो क्वालिफाइड सीएस होते हैं उनका इंट्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होता है, बट सिंस अभी आर्टिकलशिप के लिए बात हो रही है तो मैं भी आर्टिकलशिप ओरिएंटेड बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने लेटेस्ट जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करनी चाहिए। देन यू कैन टॉक अ बिट अबाउट, आई मीन, एंड हम जो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी लेटेस्ट फर्स्ट रूल हम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट अपना मेरा सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 क्लियर हुआ है, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगी, देन ग्रुप 1, देन सीए फाउंडेशन, देन ट्वेल्थ, एंड बीच में ग्रेजुएशन चल रहा है। सो दैट ऑर्डर वाज करेक्ट। Then we usually talk about our family, wherein we tell what does my father do, what does my mother do. If you have any siblings, you can share their credentials also. If any of your siblings is working somewhere, then you can mention that. And then towards the end, we talk about our hobbies and interest. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताते समय अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, जैसे विजेता ने शेयर करी कि मेरा जो है 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन था, दैट वाज वेरी नाइसली प्लग्ड इन देयर, wherein she very nicely showcased her achievements also. ठीक है, so that was nicely done. You could have talked a little bit about your family. That's all for that answer. As such, उसका कोई feedback नहीं है। बीच में क्या होता है कि जब विजेता, this is like a general feedback, not a feedback for the specific answer। जब आप नर्वस होते हो, ठीक है, तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। So it becomes very hard for the person to read between the lines and to make what you're trying to say. ठीक है, आप एक काम करना, आप जब ये सेशन खत्म हो जाए, राइट आफ्टर द सेशन, दिस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वॉच योर पार्ट। ठीक है, अपना पार्ट देखना और अपना सेंटेंस फ्रेमिंग एक बार बस थोड़ा ध्यान से सुनना कि नर्वसनेस के, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, यू डोंट, आई डोंट सी दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज इंग्लिश। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर नर्वस, हमारे पास जो है क्या है कि हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है कि मैं ये भी बोल दूं, मैं ये भी बोल दूं, मैं ये भी बोल दूं, बट उसके चलते थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत हो जाता है। उसके लिए आई विल रियली रेकमेंड दैट यू एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अपने आंसर्स की प्रैक्टिस करो। आंसर्स मुझे आज आपके कम प्रैक्टिस लगे, ठीक है। और जब स्पेशली मैं कोई ऐसा सवाल पूछ लेती हूँ जिसमें आपने वो प्रिपेयर नहीं करा है, तो ऑन द स्पॉट फ्रेमिंग में और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो बस थोड़ा सा करना है, अपना कूल एंड काम मेंटेन करते हुए अपने क्वेश्चन को टैकल करना है। और पता है क्या, मतलब ये चीज हम लोग रियलाइज नहीं करते, बट वी डू इट मोर ऑफन देन नॉट। जैसे ही सवाल सुना ना, वैसे ही मुझे आंसर देना है, मतलब क्योंकि जल्दी है ना, इंटरव्यूअर तो भाग जाएगा, उसको पता नहीं कितने काम है, हम उसके लिए इतना सोच रहे हैं। बट जब आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है, देन it is wise for you to take a pause, think of the answer and then deliver। उससे क्या है, आपके थॉट्स एकदम कलेक्टेड होंगे, गैदर्ड होंगे अच्छे से, एंड देन आपका सेंटेंस फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली वहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रोकन मतलब कीवर्ड्स नहीं जाएंगे, जैसे अपन याद करते हैं ना ऑडिटिंग में सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने का, वैसा नहीं करने का। और इंटरव्यूअर को बोलना नहीं कि सिर्फ भाई तू कीवर्ड्स पकड़, अपने आप सेंटेंस फ्रेम करके समझ जा तो वो नहीं करने का, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। YCA में जो है
आई थिंक यू मेंशन्ड अबाउट अकाउंटेंसी फुल मार्क्स, दैट वाज वेरी नाइस। तो जो है आई बिलीव थोड़ा सा और स्ट्रक्चर आप वहां पर दे सकते थे अपने आंसर को, कि आपने कब सुना और कहाँ पर जो है किस तरीके से आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है। ओवरऑल मतलब आज सच आंसर में कोई कमी नहीं थी, इट्स जस्ट दैट थोड़ा स्टोरी बिल्डिंग और कर सकते हो। वाई डिलॉइट वाला आंसर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रीजन बीइंग, आपने मुझे सिर्फ ये बताया कि आप डिलॉइट के साथ क्यों काम करना चाहते हो। सो व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग कि व्हाई डिलॉइट, वी ऑब्वियसली हमें तारीफ करनी है कंपनी की, दैट्स फॉर श्योर, राइट। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू टेल देम कि मैं what am I bringing to the table, what am I going to, you know, what value am I going to add when I'll join, ठीक है। तो यहाँ पर I follow this approach, this model that I have derived, and I call this approach as ISC approach: interest, skills and commitment, ठीक है। तो इंटरेस्ट में जो है आपको आई मीन आई एम सॉरी, हाँ, वाई दिस फॉर्म में BVP अप्रोच है बेसिकली, जिसमें आपको फॉलो करना है, ब्रांड के बारे में बताना है। B फॉर ब्रांड, V फॉर कंपनी के वैल्यूज एंड कल्चर, एंड देन P यू कैन टॉक अबाउट द पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रांड की तारीफ करिए कि मतलब हाउ सच अ बिग ब्रांड, सच अ रिनाउंड ब्रांड, एंड इट बी एन ऑनर फॉर मी to work with in such an organization, right? V for you can talk about values, where you can say that how company's values are aligning with your values, ठीक है। कि और इसमें से आपको JD में से keywords definitely उठाने हैं। And then P, then up you can talk about the culture and the people there, that it will be an honor for me to work with people who have such, you know, varied and vast experience, and it'll be an honor for me to learn from them directly and work with them directly. I'll not only learn, obviously I'll also prove my worth, and you know, I'll progress in my career। ऐसे करके जो है थोड़े से आप डाल सकते थे, अपनी कमिटमेंट भी दिखा सकते थे, और कंपनी के बारे में भी जो है आप ये BVP, लाइक ब्रांड प्लस वैल्यूज प्लस द पीपल दैट यू विल गेट अ चांस टू वर्क विद, ठीक है। ये सारी चीजें हमने हमारे इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट मास्टर क्लास में डिस्कस करी थी, लेकिन विजेता ने थोड़ा इस आंसर में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं विजेता, इस आंसर को स्पेसिफिकली इंप्रूव करना है, और ये आंसर आपको हर कंपनी के स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन जिन कंपनीज में आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कंपनी का ये वाला स्पेसिफिक आंसर डिफरेंट होना चाहिए। देखो मोर और लेस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सारी बिग फोर के पास सारे बड़े क्लाइंट है, फॉर्च्यून 500 वाले क्लाइंट्स है, लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, वैल्यूज मोर और लेस सबका सेम ही है। सो ज्यादा सेम नहीं होगा, बट अगर आप मिड साइज फॉर्म में जा रहे हैं, देन मे बी यू कैन ट्वीक योर आंसर अ लिटिल बिट। One wrong thing that you did was mentioning the client name. I have said this multiple times. I've said this repeatedly. We never mention client's name. ठीक है, ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। दिस लाइक वी हैव ना ही, जैसे मतलब अगर यहाँ पर कोई क्वालिफाइड CS भी है और आपने अपने आर्टिकलशिप में कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स पे वर्क करा है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगी आप क्वालिफाई होने के बाद जो अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर अपने क्लाइंट्स का नाम नहीं लेना है। यू कैन डेफिनेटली मेंशन इंडस्ट्री, and you can mention that you worked on listed clients, and you can definitely mention that you have such a vast experience, you worked in so and so industry, but we never mention clients, right? So clients को कभी भी mention नहीं करना है, ठीक है। टेक्निकल जो है थोड़ा रिविजन करनी पड़ेगी। हाँ। एक भी आंसर जो है अप्रोप्रिएटली करेक्ट नहीं था विजेता, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ठीक है। स्पेशली such a person who has exemptions in 5 subjects, right? My expectations from you, they increase altogether. So रिवाइज करो अच्छे से, स्पेसिफिकली हाँ। ऑडिट पे थोड़ा पकड़ अपना बनाओ। यू हैव, आई थिंक अभी इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। आई बिलीव यू मस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल्सो। तो जैसे जैसे कॉल्स आती जा रही है, मीनवाइल साथ के साथ अपना रिवाइज भी करते चलो, ठीक है। हैव यू टेकन एनी मास्टर क्लास ऑल्सो? ऑडिट। ऑडिट मास्टर क्लास, तो ऑडिट मास्टर क्लास का आपको अपने वहां पर जो इंट्रोडक्शन था ना, वहां पर मेंशन करना चाहिए था। मैम मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, तो स्टार्ट करो आज ही। उसकी मैराथन लगानी है, अपन फास्ट ट्रैक अटेंड करते हैं ना, मैराथन लगाते हैं, 8 8 घंटे पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही इसका लगाना पड़ेगा, बिकॉज अभी टाइम जो है कम बचा है हमारे पास। वैसे तो देखो मतलब आई थिंक कब तक का टाइम होता है, अप्रैल तक का टाइम होता है रजिस्टर कराने का। हाँ। बट स्टिल फिर जो है हायरिंग खत्म हो जाएगी, वैकेंसीज जो है फिलअप होनी शुरू हो जाएंगी। सो आई डोंट वांट यू टू डिले, ठीक है।
सो जल्दी से उसको करो, अभी हो गया, मस्ती हो गया, पार्टी वार्टी सब हो गया, फोकस अभी सिर्फ इंटरव्यू पे होना चाहिए। एंड इंटरव्यू को भी ऐसे लाइटली नहीं लेना है, इट इज एज गुड एज योर फाइनल एग्जाम, ठीक है ना। तो उतना ही लेवल का, अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो उस लेवल का प्रिपरेशन भी लगेगा। ओके, यस दैट्स ऑल। लास्ट में विजेता, यू हैव अटेंडेड प्रीवियस सेशंस आल्सो, मैं हमेशा बोलती हूँ इंटरव्यूअर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछने का है, क्यों नहीं पूछा? मैम, उस पॉइंट पे मैं भूल गई थी, जल्दी से खत्म करना था, ऐसा हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो व्हेन द इंटरव्यूअर, फॉर अदर्स who are not getting the context or may have joined late, so whenever the interviewer asking you to ask a question, you always do, और अपना सैलरी, स्टाइपेंड, छुट्टी, ट्रैवलिंग, इन सब से रिलेटेड नहीं पूछने का, कुछ इंटेलेक्चुअल पूछने का है या फिर प्रोफाइल से रिलेटेड पूछना है, ताकि in order to leave an impression on that person that you are such a curious person or you've done some research on the interviewer, ठीक है। आप इंटरव्यूअर की लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, मे बी उनमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू विजेता, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एंड वंस अगेन बहुत बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। स्टिल मतलब मैं तो चाहूंगी ना, अगर विजेता 7 स्कोर कर रही है तो विजेता 10 स्कोर करे, राइट। सो फॉर दैट ये मेरा फीडबैक था, और बहुत ही स्पोर्टिंगली लेना, एंड आई रियली होप दैट यू विल वर्क अपॉन ऑल ऑफ दैट। यस मैम, श्योर। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास अमन का रिक्वेस्ट आया था दैट ही वांट्स टू वॉलंटियर फॉर द मॉक इंटरव्यू। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जो है आ चुके हैं अभी, सबके हैंड रेज हैं। हाय शुभम, मैंने देख लिया है आपको। यस लकी, यस विल आल्सो गो। अभी क्या है मेरे पास, पहले जब मैं सेशन स्टार्ट हुआ था तभी सिर्फ एक विजेता का हैंड रेज आया था। अभी आई हैव करंटली 7 पीपल हु हैव रेज देयर हैंड्स फॉर इंटरव्यू। और किसी का कुछ डाउट है अभी तक यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं। हाय दर्पण, आई बिलीव यू आर इन द सेशन। हाँ अभी है सेशन में आप। सो आप प्लीज मुझे अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर चार्ट में दे रखा है connect@thinkingbridge.in, दैट इज आवर ऑफिशियल आईडी, एंड सारे रेज्यूमेज हम वहीं पर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे अपना सेंड कर सकते हैं वहां पर रेज्यूमे। कपिल, but working in Dubai, so need your. Okay, definitely Kapil, I'll definitely help you out. I have kept tomorrow as the day for reviewing all the resumes. ठीक है, today I was a little occupied, but tomorrow I'll definitely look into all the resumes, so you can stand and you can hope to get a response tomorrow, ठीक है। And किसी ने पहले भेजा हुआ है, उनका बरी हो गया होगा नीचे, तो please put another email of reminder। थोड़ा मुझे शर्म आएगा तो मैं रिप्लाई करूँगी। I'm just kidding, ठीक है। तो आई पूजा, ओके, जस्ट 1 सेकेंड के लिए माइक ऑन कर दो। शुभम, शुभम, ओके ओके शुभम। चलो शुभम से बात करते हैं। हाँ जी शुभम, क्या हाल है? मैम मैं बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैम आज नंबर आ सकता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो वही पूछ रहा था मैं। अभी आ सकता है कि कल आऊँ फिर? देखो अभी अमन का है, लकी का है, फिर चिराग का है, ये लोगों ने बहुत देर से हैंड रेस करके रखा हुआ है। सो एक काम करो, अगर आपको अभी निकलना है तो आप आ जाओ, बट अगर हम 10:30 बजे तक होंगे यहाँ पर, तो ट्राई टू लाइक ज्वाइन बाय देन। इफ वी हैव टाइम देन विल डेफिनेटली टेक, ठीक है। नहीं तो अभी इस वीक तो हम काफी सेशंस करने ही वाले हैं मॉक इंटरव्यूज के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मौका नहीं आएगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, चलो। यस पुरुजीत, देखते हैं आज मौका आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो फिर हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ठीक है ना। सो डोंट वरी। राइट, चलते हैं हम अमन के पास। हाय अमन, हाउ यू डूइंग? Hello, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए I'm doing good. क्या राज है इस Ma'am, का, क्या क्लियर I हुआ? am, ये इंटरमीडिएट, ये फाइनल? ma'am, I have cleared CA intermediate both group 1 year back, ओके, and I am looking for CA industrial training. I have completed my 2 years of articleship, बहुत ही बढ़िया। तो and आपका I इंटरव्यू तो am, बड़ा टेक्निकल लेना पड़ेगा हमें। ma'am, you can, of course, ओके,
And ma'am, I am very new to Thinking Bridge. I have just installed this app this week only. Okay. तो So I am कुछ a new पता है student. आपको थिंकिंग ब्रिज के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? Yes, ma'am. You are giving practical exposure to students who are looking for any job or opportunities in finance field. या राइट, एब्सोल्युटली राइट। Yes. मतलब देखो कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे लर्नर्स हैं जिनका चांस नहीं आ रहा, वो सब छोड़ के जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है। एटलीस्ट यू शुड स्टे इन द लाइव सेशन फॉर एवरीबॉडीज एल्स मोटिवेशन। ठीक है ना, ऐसे नहीं करने का। राइट, टेक्निकल राउंड के लिए मेनली व्हाट शुड बी प्रिपेयर फॉर स्टार्ट ऑडिट आर्टिकलशिप? आयुषी, वी हैव डिस्कस दिस इन आवर ऑडिट मास्टर क्लास। इसमें हमने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, और अगर आपने ऑडिट मास्टर क्लास नहीं भी लिया तो भी हमारा जो रेज्यूमे जीडीपीआई वाला मास्टर क्लास है वो भी, उसमें भी हमने जो है काफी एक्सटेंसिवली कवर करा है कि आपके स्पेसिफिकली इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। बेसिक्स आपके ऑडिटिंग के होंगे, आपको स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इंडेस, यस, इंडेस अगर आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं भी था तो भी लेटेस्ट इंडेस, P2P प्रोसेस, इंडेस 115 जिसमें से काफी हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस करंट अफेयर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड चीजें आपको डेफिनेटली पढ़कर जानी है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी थरो विद योर सिलेबस। ठीक है, राइट। हाय चंचल, यस चंचल, हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। सो चंचल जो है भी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था ईवाई में, पर उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो हर क्वेश्चन इज कि, और फोन किया तो उठाया भी नहीं, तो व्हाट शुड आई डू नाउ? यू शुड सेंड एन ईमेल, ट्राई टू गेट द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर एचआर, यू विल गेट दैट ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन से उनकी ईमेल आईडी निकालिए और उनको जो है एक फॉलोअप ईमेल भेजिए अपने रेज्यूमे के साथ अटैच करके। और चंचल, मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपके पास अपना वीडियो रिज्यूमे बना हुआ है तो वो भी साथ के अटैच कर देना। ठीक है, आप उनको फॉलोअप में डालना कि मेरा जो है पार्टनर राउंड हो चुका है, बट आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू मैडम अभी तक। ठीक है, और ऑब्वियसली आपके पास जो है इंटरव्यू के लिए मेल आया होगा तो आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी होगा उनका। तो जस्ट सेंड अ फॉलोअप ईमेल। ठीक है, कल वेंसडे है, ट्राई टू सेंड इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट, क्योंकि जब मोस्टली शायद 11 बजे तक लॉग इन होता है, तो ट्राई सेंडिंग बाय 11 AM। ठीक है, और फिर अगर आपको रिस्पांस नहीं आता है, फिर जो है 3-4 दिन में दोबारा फॉलोअप करना रहेगा। फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जो है छोड़ ही देते हैं कि भाई हो गया, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ईगो इतना बड़ा है ना हमारे इंडियंस का कि अरे नहीं कर रहे तो हाँ, और भी कंपनीज हैं। नहीं, ईगो को पीछे रख के ट्राई टू फॉलो अप विद द कंपनी। ठीक है, कमिंग बैक टू अमन। अमन, आपको जाना है Yes, ma'am. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, राइट? Yes, ma'am. कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, कुछ आपने सोचा है? Ma'am, investment banking, first preference, I should say. Okay, have you shortlisted any companies yet? Ma'am, JP Morgan and Morgan Stanley and कहाँ others. से हैं आप वैसे अमन? I am from Delhi, India, Rohini. अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप, बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, कौन कौन से फील्ड का एक्सपोजर आपको ऑडिट में अपने? Ma'am, I have taken exposure in mainly taxation field for 2 years. टैक्स But में I am, DT है yes, कि ma'am. क्या है, IDT है? Ma'am, please can you repeat? टैक्स में व्हेन यू से टैक्स, तो GST है कि डायरेक्ट टैक्स है? Ma'am, both. I have taken experience in GST as well and direct tax also. I ओके have worked in a small firm actually, and there I got exposure in both the areas. ओके ओके, ठीक है, Yes, ठीक ma'am. है, कोई दिक्कत नहीं है। Now, मैं बस ये पूछ रही थी कि investment banking is increasing my interest, so I want to go there. ओके ओके, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। Yes, ma'am. एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो चलिए फिर अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो आपको जो है हम लेकर चलते हैं JP मॉर्गन में, और आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम एवरीवन। वी हैव अमन गुप्ता हु वांट्स टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वांट्स टू गो टू JP मॉर्गन प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में, राइट? Yes, सो ma'am. हाय अमन, हाउ आर यू डूइंग? Ma'am, I'm doing good. Please introduce yourself, Aman. Ma'am, my name is Aman Gupta. I have been born and brought up in New Delhi, India.
I have completed my Masters of Commerce from Ramjas College, Delhi University. I have completed CA Inter both groups in the year 2020. I have completed 2 years of articleship from HVS Associates, and I have completed my graduation from Satyavati College, Delhi University itself. Okay. I have experience in taxation and direct tax and GST in my articleship for 2 years. And now I am applying in your company for further opportunities in investment banking profile. Okay. Okay. Why do you want to work in the field of investment banking? Ma'am, during graduation and during my post graduation, I found my interest in stock market, which fascinated me. Analyzing companies, its shares was my favorite pastime. So investment banking is the perfect suit for my interest area. It's a passion for me actually, and I think I can do better where I have passion and interest. Okay. So you mentioned that you love analyzing company. What was the last company you analyzed, and could you share the important observations? Ma'am, I analyzed Reliance Industries last. I analyzed it because I was trying to analyze the valuation that was given to these big Before, corporates, okay, yeah, please go ahead. top corporates, and which have good management to invest in. And I was thinking to explore the area of refinery companies to identify them as a good investment avenue. Okay. Any refinery companies on your list as of now? Ma'am, I am interested in investing in Reliance Industries because it has a clean management with proven track record of many years. It has a good profitable balance sheet for many years, and it is growing by a good CAGR rate for many years. What is the current CAGR? Ma'am, its share price has grown by 12% for last 10 years, and its profits has compounded by 20% for last 5 years. Net profit, to say specifically. Okay, so for a beginner investor like me, Yes. what should be my position, long or short, for Reliance? You should definitely go long in the current market conditions because it has corrected from a high level of 2800 to a 2400 level. The valuation seems at a 9 to 10 P valuation, which is very low valuation as compared to its past. And a price to book valuation of 3 is a good time to invest in, looking at the future growth that it will continue in the future and the new opportunities which are opening within the refinery industries. Could you substantiate shares in mutual fund transactions from income tax perspective? Ma'am, from income tax perspective, there are 4 types. Long-term capital gains, which are divided into capital gain, which is from stocks and other capital gains. And there is a short-term capital gain, which is divided into capital gain for share market income and other incomes. To be precise, under long-term capital gain, share market is taxed at a 10% with a exemption limit of 1 lakh rupees for an individual, and for short-term capital gain the share market income is taxed at a 15% tax rate, and there is no exemption in short-term capital gain of shares. One more point I want to add that the surcharge rate which is applicable on share market income has been reduced. It has been a maximum of 15% if the income exceeds 2 crore rupees. Previously, with the amendment in 2020, I guess, there was a amendment in capital gain taxes which increased the surcharges to 37%, but with a
circular of government it reduced to 15%. For this is for an individual specifically. Okay. All right. Could you tell me the professionals that can declare profits under Section 44 ADA? Ma'am, for professionals, a taxpayer can opt for 44 ADA if he is of specified professions, for example, doctors, lawyers, and other professions specified in the section. They have to declare of their income at 50% of their total revenue, and that will be their taxable income calculated. And this section is yes, that's all. Okay. Which all assessees can file ITRU? Ma'am, please repeat. Which all assessees can file ITRU? Ma'am, I don't have knowledge about this. Can you talk about the concept of updated return under Section 139 8A? Ma'am, I don't have knowledge of this also. All right, no problem. Could you talk about the requirements of tax audit under Section 44 AB when the turnover is less than 10 crores? Ma'am, there is a section 44 AB for audit of tax accounts. Under this, if any person have a sales above 1 crore, then he has to mandatorily required to audit his accounts. In the case he is not opting 44 AD, and he has to, but there is an exemption for special cases. For example, if a person has a total receipts in his business which is less than 5% as cash revenues, and more than 95% is from electronic clearing system, then his limit of 1 crore shall be increased to 10 crores. And both the conditions must be satisfied. First, this is condition, and the second condition is that all the payments must be more than 95% by electronic clearing system. If both the conditions are satisfied, the exemption limit for going under a tax audit has been increased from 1 crore to 10 crores. He has to maintain books of accounts for computing his taxable income, books of account mainly. Okay, all right. So Aman, why should we hire you? Ma'am, being an enthusiastic candidate, and I have been good in academics. I have exemption in 5 subjects from all 8 subjects in CA intermediate. I have completed my master's with grace marks. My CGPA was 8.6 around, and I have always delivered to my clients during my articleship, going beyond my limits. And always I have been tried to I have always been happy to work with your company. Okay. All right, that's all from me. Do you have any questions for me? Ma'am, as we have discussed our interview, if I would be able to know my remuneration, which I would get for the coming job. Well, that will be according to the market standards. And when you applied for the for this role, it was, I think, clearly mentioned there. It should be around 15 to 20,000. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Great. बहुत बढ़िया भाई, अमन के लिए तालियां बजनी चाहिए ऐसे सब लोग जो है ऐसे ऐसे कर दीजिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपने सारे आंसर्स बोले हैं। डेफिनेटली थोड़े नर्वस थे स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, आई थिंक ही वाज Ma'am, I have given first time interview. First time I have given this interview. तो आर्टिकलशिप के टाइम पे नहीं दिया था? No, ma'am. अच्छा, ओके ओके।
ठीक है, तो पहली बात तो अमन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, सैलरी, छुट्टी कितना मिलेगा, ट्रैवल, इन सब के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इंटरव्यूअर से. Ma'am, that was my doubt, ma'am. You said right that not, but if one wants to matlab discuss his salary, so what he should do if he तो wants to do सैलरी this? तो तब डिस्कस करेंगे ना जब आपके पास ऑफर लेटर आएगा. ऑफर लेटर आने के बाद सैलरी डिस्कस होती है, या फिर एंड ऑफ सैलरी नेगोशिएशन का पॉइंट भी ना तब आता है जब आपको क्लियरली, मतलब वहां पर व्हेन यू आर इन अ लाइक स्ट्रॉन्गर पोजीशन, राइट. अभी क्या है, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जॉब चाहिए एंड यू स्पेसिफिकली वांट इन पर्टिकुलर ब्रांड्स, राइट. सो प्लीज, आई एम सॉरी फॉर Yes, सेइंग, ma'am. बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स, राइट. हम लोग को तो चाहिए, हम लोग को एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए अभी सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्सपोजर के नाम पे अगर फ्री में भी Right, काम ma'am. करने का मौका मिलेगा जेपी मॉर्गन में, तो व्हाई नॉट, आई थिंक यू वुड, मतलब एब्सोल्युटली गो फॉर इट. बट क्वालिफाई करने Right, के ma'am. बाद आई थिंक यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन. मतलब क्वालिफाई करने के बाद भी मैं तो बोलूंगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा. फ्रेशर्स के पास भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो सैलरी नेगोशिएट कर पाए. आई मीन, पीपल डू एंड सम पीपल आर एबल टू ऑब्वियसली Right, right. some hike, but it's usually like not advisable to negotiate the salary at the fresher level. ठीक है ना. तो एक्सपीरियंस अगर आप Okay, hold ma'am. करते हैं, डेफिनेटली आप यू कैन गो फॉर इट. रही बात क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए इंटरव्यूअर से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. हमें उसके बारे में पूछना चाहिए, हमें अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड काम के बारे में पूछना चाहिए. लाइक व्हाट वुड अ नॉर्मल डे फॉर एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी लुक लाइक इन योर कंपनी, राइट. फिर आप जो है, अगर आपने इंटरव्यूअर की प्रोफाइल को अच्छे से गो थ्रू करा है, तो आप इंटरव्यूअर के एक्सपीरियंस में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप कुछ फिलोसफिकल, कुछ लाइफ लेसन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो. जैसे लास्ट वाले लाइव सेशन में वन ऑफ द कैंडिडेट्स ही आस्क्ड द क्वेश्चन, if you had a chance to go back in time, like if there was a time machine, if you had a chance to go back to time and you were to share 2 lessons with your current self, what would you say? So like ऐसे थोड़ा सा Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आपको हमें क्वेश्चन पूछने का यही गोल है कि हमें उसके ऊपर, इंटरव्यूअर के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ना है कि यार इसने बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछा, दैट पर्सन मेड मी थिंक, राइट. लाइक एक इंटरव्यूई Yes, ma'am. जो आया था मेरे पे इंप्रेशन छोड़ के जाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो यू शुड नेवर लेट गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, नेवर वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी वेयर द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू टू आस्क समथिंग. ठीक है, तो अच्छा सवाल पूछना है, कुछ इंटेलेक्चुअल पूछना है जिससे वो इंप्रेस हो जाए. ठीक है. Right, ma'am. मैम, इनके ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्टाइल पूछ सकते हैं, या डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट मोर और लेस ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिकली अवेलेबल है, देन आई डोंट थिंक यू वुड गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स. ठीक है, तो कुछ ऐसा पूछो जो शायद आपको नॉर्मल, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन में ऐसे अवेलेबल ना हो. ट्राई टू आस्क समथिंग इंटेलेक्चुअल, ट्राई टू आस्क समथिंग पर्सनल, नॉट पर्सनल इन द सेंस कि उनकी फैमिली से रिलेटेड, बट उनके वर्क एक्सपीरियंस में से आप पर्सनलाइज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटरव्यूअर जो है XYZ पर्सन है, और आपने जो है उनका लिंक्डइन पर देखा कि उनको जो है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑडिट में जो है एक्सपीरियंस है, देन मे बी यू कैन आस्क कि like how the progress happened, and what were the challenges that you faced in your 15 years of experience in auditing profile. ऐसे ऐसे करके आप पूछ सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट, चलिए अब हम चलते हैं. टाइम क्या हो गया? टाइम तो 10 बज गए हैं, देखो. Ma'am, can I ask a doubt? हाँ जी, हाँ जी. मैम, इज इट गुड टू चेंज द लाइन? मतलब मैं लाइन चेंज करना चाह रहा हूँ टैक्सेशन से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो ये क्या कंपनी मेरे को एक्सेप्ट करेगी? 100% आपका सी लाइफ कोई हमारे कोई रिजिड थोड़ी ना है कि भाई हमने डिसाइड कर लिया. लोग तो अपना 3 साल आर्टिकलशिप स्टार्ट ऑडिट में करते हैं, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद टैक्स में चले जाते हैं. मेरी फ्रेंड ने Yes, भी ma'am. सेम किया था. शी डिड आर्टिकलशिप इन ऑडिट, एंड अर्चित सर का भी सेम सीन है. उन्होंने 3 years आर्टिकलशिप किया एंड देन ही मूव्ड इनटू टैक्सेशन, GST. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आपका एक चांस ही है फॉर यू टू गेट एक्सपोजर इन इंडस्ट्री, बिकॉज हमारे Yes, ma'am. सीए ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता, आर्टिकलशिप में वो नहीं होता. तो वो थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सीए इंस्टीट्यूट ओनली वांट्स यू टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्री साइड ऑफ थिंग्स. ठीक है ना. तो दैट्स एन Ma'am, ऑप्शन. last thing I want to ask, if Masters of Commerce degree will help me in any way in interview, or I should quote that in my interview? Is it from open call, like is it No, ma'am, it's a correspondence? regular college. अच्छा,
आई थिंक रेगुलर कॉलेज फिर भी थोड़ा हेल्प करेगा, बट सिंस यू आर ऑलरेडी डूइंग एन एडवांस डिग्री, आई एम नॉट श्योर हाउ मच वैल्यू विल दैट ऐड। ठीक है, क्योंकि मेरे को एज एन इंटरव्यूअर मेरे को ये देखना है कि आप मेरी प्रोफाइल में कैसे फिट इन होगे, राइट? सो योर नॉलेज, एंड आई डोंट थिंक मतलब एमकॉम में स्टॉक मार्केट वाले ज्यादा सब्जेक्ट्स वगैरह ज्यादा कवर्ड होते हैं। एक मैम इट्स सब्जेक्ट होता मैनेजमेंट है, डिग्री। गेस एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो यस मैम, फाइनेंस। एक दो ही होते हैं बस। हाँ, तो आई थिंक मतलब दैट ऑल्सो हमें सबको पता है, सब लोग वो 10 years पढ़कर ही जो है पेपर दे रहे होते हैं, वी ऑल नो यस दैट, मैम। राइट? तो लुकिंग एट दैट, हाँ, आई मीन यू कैन डेफिनेटली कोट इट, नॉट सेइंग दैट यू शुडंट कोट इट, आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन यू शुड डेफिनेटली कोट इट, बट विल दैट लाइक प्रोवाइड यू एन एज? आई वुड से नॉट रियली। रादर देन आप ओके अपना, मैम। और ये जो आप अपना, मैं तो बोलती हूँ लाइक इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू समथिंग, मैं बोलती हूँ कि अमन आपने एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो अपना, ठीक है? इन दैट पोर्टफोलियो पुट अ लिस्ट ऑफ, मतलब गूगल ड्राइव पे ही बना लो, आपने जो भी एनालिसिस करे हैं ना, पुट दैट एवरीथिंग इनटू एक्सेल शीट, और अपना गूगल ड्राइव पे ओके बना मैम। लो, कंपनी वाइज एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर लो कि मैंने इन कंपनीज का एनालिसिस करा हुआ है और मेरा जो है ये फाइनल पोजीशन है। आप ये सोचो ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, आप ऑलरेडी अगर वो चीज अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करके लेके जाओगे और रिज्यूमे पर डाल दो, माय पोर्टफोलियो ऑफ ऑल द एनालिसिस दैट आई हैव डन इन द पास्ट, दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली इंप्रेस देम। ठीक है, तो कुछ यस मैम करो तो फिर श्योर। हटके करो, ऐसा फिर नॉर्मल एमकॉम से आई डोंट थिंक दैट यू विल स्टैंड अ चांस टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। ठीक है, श्योर मैम श्योर। या अगर आपने ऑलरेडी यू थैंक यू हैव मैम। एक्सपीरियंस ऑफ यू नो एनालाइजिंग कंपनीज, आई थिंक इट वुडंट हर्ट मच फॉर यू टू प्रिपेयर दैट पोर्टफोलियो ऑफ योर्स। यस मैम, आई हैव करंटली पोर्टफोलियोज। बहुत बढ़िया है, तो बस फिर उसको डालो और उसको अपने रेज्यूमे पे भी डाल दो, माय पोर्टफोलियो ऑफ लाइक द वर्क दैट आई हैव डन, दिल क्लिक ऑन द लिंक, दिल सी ऑल द वर्क दैट यू हैव डन, लिंक को ओपन यस फॉर ऑल मैम। कर देना, यूजुअली पीपल ओके मैम। कमिट दिस मिस्टेक। ठीक है, तो एक्सेस ही नहीं थैंक मिलता यू मैम। होगा। ऑलराइट, चलो भाई, बहुत बढ़िया किया आपने। आई डोंट थिंक आई हैव एनी फीडबैक एज सच, मे बी टेक्निकल में कुछ एक दो जगह आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना टैक्स का, क्योंकि जो जो काम आपने करा यस है मैम। वो आपको जो है अच्छे से उसको बोलना आना चाहिए, सो दैट्स इट। यस मैम। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव चिराग। हाय चिराग, अमन यू कैन लोअर योर हैंड, नाउ योर्स इज डन। हाँ जी चिराग, क्या हाल है आपके? हेलो मैम। हाँ जी चिराग, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी का राज बताइए, क्या अभी हाल फिलहाल में क्या क्लियर करा है, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल? मेरी आवाज आ रही है? हेलो लकी, आपसे हेलो पहले ना चिराग का हैंड रेस था, इसके बाद विल कम टू यू। ठीक है, हाँ जी चिराग, आपकी वीडियो थोड़ा सा अटक रही है। मैम, नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। गाइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? हेलो हाँ, तो एम आई चिराग, ऑडिबल? हाँ चिराग, अभी आप ऑडिबल हैं, अभी आप ऑडिबल हैं। ओके मैम। तो मैम मेरा अभी ग्रुप 2 क्वालिफाई हो गया नवंबर 22 में विद एग्जामिनेशन इन एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट एंड ईआईएसएसएम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी बोथ ग्रुप्स हो चुके हैं, अब आर्टिकलशिप के लिए यस अप्लाई करना मैम। चाहते हैं आप? चलो, मैम बहुत आई बढ़िया। हैड ऑलरेडी अप्लाइड इन मेनी ऑफ द टॉप 20 फर्म्स। मैंने हम्म, अपना रेज्यूमे भेज दिया है, बहुत जगह मेल कर दिया मैं अपने रेज्यूमे। ठीक है, आपको जल्दी रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इंटरव्यूज वगैरह होने एक्टिवली शुरू हो गए हैं। ठीक है, यस कौन सी मैम। कंपनी में जाना चाहते हैं आप, कौन सी मैम प्रोफाइल? एनी बिग फोर कंपनीज, बिग फोर फर्म्स ऑन। फिर भी एक आधी तो प्रेफरेंस होगी। ईवाई। ईवाई में चलते हैं, चलो ईवाई में चलते हैं। कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहेंगे आप? ऑडिट, स्टेट ऑडिट। स्टैट ऑडिट, बहुत बढ़िया। चलिए, स्टैट ऑडिट में चलते हैं। और यूट्यूब पे क्या चल रहा है? चलो ठीक है, राइट। सो हाय चिराग, हाउ आर यू डूइंग? Hello, ma'am. I am doing fine. Chirag, tell me something about yourself. Ma'am, I am from Gwalior. I have been born and brought up in Gwalior. I had just cleared my Group 2 intermediate with the exemption in advanced accounts, audit, and EISM. I had cleared my Group 1 in Tech 21 with the exemption in costing. I had scored 56% in my CA foundation, and I have been just schooling. I had done my schooling from St. Teresa's School, Gwalior.
And my father is also an accountant in many small proprietorship and private companies in Gwalior. And I have been doing much of the accounting work with him back on Excel and on Tally Prime. And I have been just a good basic knowledge of the Excel and Tally Prime. Ma'am, I like some hobbies like I like to be physically active, like going to gym, playing sports like cricket, football, and badminton. Hmm. Do you work out regularly? Yes, ma'am, I go to gym regularly. What do you do? Weight training or cardio? Weightlifting, somewhat. How much do you lift? I mean, it's like depends. Like for squats, I lift up to 45 kgs, Okay, and so for beginners. Like, how long have you been doing gym? I mean, it's only 2 months. Oh, Now I okay. get It's 2 time months. after CA exams, Okay, so okay. it's only 2 months. Okay, chalo. All right. So, Chirag, tell me, why did you choose CA? Ma'am, my father also chose CA and he couldn't make it. He just cleared his CA intermediate, but he couldn't clear his finals and he wants me. And I just been fascinating about the word CA because my father is an accountant. He always talks about like the GST returns have to be filed and many of the accounting and taxation terms. So I was just fascinating from my childhood that what are these terms? What are the meaning of these terms? So yeah, I just want to explore this and that's why I choose to be a CA. Hmm. Why do you want to work in stat audit? Ma'am, state audit a profile which will provide me the all-round exposure of many which will provide me the all-round exposure in different fields. Like I should have a basic knowledge of accounting standards, auditing and taxation and all other fields. So it will provide me the exposure of all around. That's why I choose to in state audit. Okay. Right. So, asking a couple of technical questions here. Yes, ma'am. How do you perform walkthrough and control testing? Control testing, like we just go into the firm or the organization, we just check how the different works are to be done. Like if they are selling something, trading is being done, like physical inventory checking is done. So how they are maintaining the records of their inventory and other things like if they are incurring the expense, how the expense is incurred, did the appropriate authority signatory is there and other controls. We just check the controls and their operating effectiveness of the controls. Okay. Tell me about 5 auditors options. Completeness, cutoff, accuracy, classification, क्या कहते हैं valuation. Okay. Okay. Can you tell me the difference between performance materiality and overall materiality? Ma'am, overall materiality for the financial statements as a whole, where performance materiality depend upon like if we perform a procedure, we have to check like the materiality level, like the risk of material statement level should not overpass the materiality level. Therefore, we just have somewhat of room. We just have somewhat of space so that the overall mistake level of material statement does not surpass the materiality level which we have for the overall financial statement. That's why we choose to have a lower level than of the overall materiality, that is performance materiality, so that the overall statements combined should not surpass the overall materiality level of the financial statement. Okay. Okay. And how would you check the impairment of assets? Impairment of assets, ma'am, by physical verification mostly. And how do you physically verify inventory? Ma'am, physical verify inventory, like we mostly go on the last date of the year financially, last date of the financial year to check the stock, whereas the physical counting is done by the organization. We just go on that date and we just verify that the controls, like how they are checking the inventory and how they are checking what are the controls on checking the inventory, are the management instructions are being followed properly by the employees around there and their other working papers, etc. Okay.
Chirag, where do you see yourself 5 years down the line? Ma'am, I see myself as a chartered accountant 5 years down the line, and I just see to be working with the firm, with the EY only. Okay, that's all. Okay, all right. Well, thank you so much, Chirag. Do you have any questions for me? Yes, ma'am. I have some questions like I just want to ask, how will you use the article sources in your organization? Like, how would you include in your work? Like, I will be involved in routine work, or will I be included in decision making processes also? I couldn't understand the second one. Ma'am, am I be included in decision making processes also, or just I be included in the routine checkup and audit work? See, as article, obviously you require a lot of experience in order to reach that level where you'll be part of decision-making team. That's obviously the upper management or the top management's work, right? In terms of exposure, you will definitely be deployed to one of the assignments, depending on what project you're working on. You will be deployed in my team, but in my team also, which client is currently is having the vacancy, there you'll be deployed. Then obviously you'll have seniors, you'll somewhere down the line you'll also have juniors to work with. So yeah, that's about it. Thank you, ma'am. Thank you so much. बहुत बढ़िया. Very good, चिराग. बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया. तालियां होनी चाहिए. हाँ जी चिराग आनंद, 2 चिराग है यहाँ पे. पहले आपका भी आई थिंक हैंड रेज था, फिर आपने लोअर कर दिया था. कोई बात नहीं. YouTube कहाँ चली गई? YouTube जनता शांति हो गई है बिल्कुल. YouTube जनता, आप अगर देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव सेशन, आप जरा तारीफ करिए. चिराग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंटरव्यू में, उन्होंने टेक्निकल इतना अच्छे से दिया एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू सेशन. तारीफ बनती है, तारीफ तो बनती है. यस, गुड जॉब, गुड जॉब. एक कंजूसी जो कर रहे हैं ना ताली बजाने में, तुम्हारी बारे में भी कोई नहीं बजाएगा. ठीक है. हाँ, मयंक आ गया है, ऐसे ऐसे डराना पड़ता है. चलो. सो चिराग, ओवरऑल कॉन्फिडेंस अच्छा था आपका, ठीक है. बस मैं ये बोलूंगी आपको कि जब आप बोल रहे होते हो आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, विच इज फाइन. आई बिलीव लाइक जो बहुत ज्यादा सोचते हैं थोड़ा फास्ट भी बोलते हैं, ठीक है. सो दैट्स फाइन. थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश करना, क्योंकि आई हैव टू लाइक लिटरली ट्राई टू कैच अप विद व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है. सो ट्राई टू स्लो डाउन. हाँ जी, नर्वस हो जाता, थोड़ा नर्वस. कोई बात नहीं. आउट ऑफ नर्वसनेस हो सकता है, क्योंकि 10 थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में, हमें लगता है ये भी बोल दो, ये भी बोल दो. तो उसको जो है थोड़ा सा विद प्रैक्टिस ट्राई टू डू 1 or 2 more sessions of these mock interviews and you will be sorted. ठीक है. इंट्रोडक्शन मुझे आपका अच्छा लगा, आपने काफी होलिस्टिक बनाया था. आपने कोई मास्टर क्लास ली हुई है हमारे यहाँ से, चिराग? Yes, ma'am. Audit master class and GST master class I had taken. हाँ, तभी जो है काफी टेक्निकल आपका अच्छा था. ठीक है, मैं बोलने भी वाली थी, बट जैसे 1-2 क्वेश्चंस में आप अटक गए. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना. एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन वाला आंसर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, सो उसको डेफिनेटली रिवाइज करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में चांसेस हैं उसके पूछे जाने के. ठीक है. Okay. एक इंटरव्यू का लिस्ट, इंटरव्यू क्वेश्चंस का लिस्ट हमने डाला हुआ है चिराग, आपके ऑडिट मास्टर क्लास में ही, जीएसटी मास्टर क्लास में भी डाला हुआ है. उसको गो थ्रू कर लेना. मे बी शायद थोड़ा देर में अपडेट हुआ होगा तो आपको पता नहीं चला होगा. तो आप उसको गो थ्रू करना और वो सारे क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर प्रिपेयर करना. ठीक है. Thank you. वाई सीए वाला आंसर सही नहीं था. आपको स्टार्ट ऐसे नहीं करना चाहिए था, दैट माय फादर कुडंट मेक इट एंड देन ही वांट्स मी टू डू इट. नो, दैट्स नॉट हाउ वी स्टार्टेड. आप बस बोलो दैट we can call your father a businessman, right? He is having retainership of different clients, right? So say Yes. that my father is a businessman and he takes care of, he's providing accounting services to different SMEs, like small and medium sized enterprises or organizations. Okay. And since my childhood, I've always seen him, talking about financial statements, numbers, balance sheet, and I developed interest into the finance field from an early age on. Okay. And then my father only introduced me to this chartered accountancy course because he was once a part of this course, right?
When I got to know about this course, I immediately wanted to, like, I got to know about this course, and I was so passionate about numbers, and I've grown seeing numbers in books of accounts and financial statements and everything, and analysis. I've grown seeing these numbers, so my interest was definitely, developed, and that's when I decided that I'll go for chartered accountancy, and I'm absolutely passionate about this course, and I'm so amazed with the respect that a chartered accountant has in the society, and it's such a renowned profession across India. Not only it'll be a way for me to grow in my career and excel in my career and provide valuable services to my clients, but at the same time, I believe the CA journey in itself is such a wholesome journey that can teach me really important life lessons, like the importance of perseverance, the importance of failure, and getting up from failure. थोड़ा सा होलिस्टिक आंसर आप देख रहे हो, मैंने मतलब सिर्फ आपकी स्टोरी सुनकर मैंने ऑन द स्पॉट आंसर बना दिया, ठीक है? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. थोड़ा सा होलिस्टिक आंसर बनाना, अपना ये जो सेशन है आप इसको दोबारा देखना एंड ट्राई टू रीमेक योर आंसर, स्पेसिफिकली YCA वाला, ठीक है? स्टार्ट ऑडिट में आपने 3 लाइनें बोली, लेकिन तीनों लाइनों में सिर्फ एक उसका वो था, एक्सपोजर, ठीक है? ट्राई कर अब चिराग ने कि मैं क्या बोल दूं, लेकिन क्रक्स वही निकल रहा था, एक्सपोजर। ठीक है, तो दैट आंसर वाज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट, ट्राई टू इंप्रूव दैट आंसर आल्सो। जैसे मैं बताया ही था, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन। Very loaded. हाँ, सो जो ऑडिट और मतलब ये वाला जो फील्ड है ना, फील्ड वाला जो होता है, सबसे पहले हमें फील्ड की तारीफ करनी होती है, ठीक है? फील्ड में जो है आपको बताना है कि लाइक इट्स सच अ वास्ट फील्ड दैट आई गेट टू वर्क विद सो मेनी क्लाइंट्स इन सो मेनी इंडस्ट्रीज, ठीक है? जो आपने मतलब थोड़ा आप मेंशन करना चाह रहे थे, बट वो मैसेज क्लियर नहीं हुआ मुझे, ठीक है? देन आप बता सकते हो कि चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट होगा, क्लाइंट फेस करना पड़ेगा, ग्रेट एक्सपोजर होगा, देन आई ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू डील विद टॉप मैनेजमेंट ऑफ टॉप कंपनीज, and I'll get to work with teams who are so passionate about working. I myself am a workaholic, and it'll be an awesome experience to be surrounded by such intellectual people who are so passionate about their work and delivering value to the clients, ठीक है? फिर जो है आप थोड़े से टेक्निकल टर्म्स, सिंस आपने ऑडिट मास्टर क्लास लिया हुआ है, देन आप बता सकते थे कि I took this audit master class from Thinking Bridge, where I got to learn about practical aspects of auditing. I learned about the assertions, I learned about performance materiality, etc. And I was so amazed that if this is the level of work that people at Big Four are doing, then I certainly want to get that kind of exposure for myself as well. Okay, on the spot answer for you. Try to make something around it. Okay, ma'am. Thank you. आई थिंक दैट्स ऑल। बाकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस मैं बोलूंगी कमी नहीं थी कॉन्फिडेंस में, थोड़ा सा अपने मतलब ठहराव के साथ आप बात कर सकते हो, बस ऐसा हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बस लाइक आंसर देना और मुझे घर जाना है, ठीक है? थोड़ा ठहराव के साथ बात करो, थोड़ा सा और एलिगेंस लेकर आओ अपने डिलीवरी में, दैट्स ऑल। Okay, ma'am. Thank ऑल द you. बेस्ट चिराग, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। मैम टेक्निकल क्वेश्चन सबके लिए अवेलेबल करवा दो प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो। ओके, कौन सी फील्ड का चाहिए आपको चिराग, बताओ। मैं आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, तो मैं वहीं पर जो है क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगी, ठीक है? हाय अखिलेश, हाउ आर यू डूइंग? पूजा दीदी, प्रखर, मैं अभी 11th में हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी प्रखर मेन फोकस आपका आपकी 11th और 12th पे होना चाहिए, ठीक है? 12th अभी रजिस्टर आप करवा सकते हो अपना सीए में, बट अभी क्या है, इमीडिएटली स्टार्ट करोगे तो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। 12th में जब आपको थोड़ा टाइम हो तो थोड़ा थोड़ा आप अपना पहले कोचिंग ले सकते हो, ताकि जब आपका बोर्ड्स खत्म हो उसके बाद आप अपना रिविजन स्टार्ट कर सकें, ठीक है? एक हमारी अग्रिका मैडम जी हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो सीए फाउंडेशन पढ़ाती हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां से बहुत हेल्प मिलेगा सीए कोर्स को लेकर और इन जनरल अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है? जैन भाई माइक ऑन, आपका ध्यान रखो। अच्छा हाँ, सो नाउ फाइनली लकी, सो लकी विल बी टुडेज लास्ट शुभम। थोड़ा सा जो है अब क्या है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, ठीक है? तो हम 10 मिनट लगाएंगे, हम कल परसों में दोबारा करेंगे, आप प्लीज दोबारा ज्वाइन इन करिएगा, ठीक है? हाँ, डोंट वरी। इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट, हर्षल रेगुलर कॉलेज जरूरी करना है क्या?
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, रेगुलर कॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई है यहाँ पर रेगुलर कॉलेज का? लेट मी नो इन द चैट. इज एनीबडी हियर फ्रॉम रेगुलर कॉलेज? चिराग, आई थिंक यू आर फ्रॉम रेगुलर कॉलेज. चिराग, आनंद. अच्छा, अमन इज ऑल्सो फ्रॉम रेगुलर कॉलेज. तो अमन से पूछते हैं. अमन, आई अनम्यूट यू प्लीज. आप ये क्वेरी है हमारी हर्षिल की. तो हर्षिल की ये क्वेरी है. अमन प्लीज आप एक बार उनको बताइए कि रेगुलर कॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अमन, आई एम अनम्यूटिंग यू एंड इफ यू कुड आल्सो स्टार्ट योर वीडियो. हाँ जी. Ma'am, I will suggest that regular college is a must because there are societies, there are events, there are elections. I was involved in elections in my graduation so much that I just was not bothered about my studies. So regular college बहुत important है. उसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो. जैसे मैं फैशन सोसाइटी का मेंबर था, तो मैं एक तो ये सीवी में भी ऐड कर सकता हूँ और उसके अंदर काफी एक्टिविटीज होती हैं. अलग अलग कॉलेज में जाना होता है. मैं अभी रामजस कॉलेज में अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है. उसका अलग ही एक्सपीरियंस है. आपके पास अलग अलग फेस्ट होते हैं, आपको कुछ ऑर्गेनाइज भी करने पड़ते हैं. जैसे कुछ इवेंट्स हैं वहाँ पे, या फिर आप प्लेसमेंट सेल के पार्ट बन सकते हैं, आप कॉमर्स की सोसाइटी के पार्ट बन सकते हैं, आप इवेंट्स करवा सकते हैं. इवेंट्स करवाना एक काफी अच्छा पार्ट होता है रेगुलर कॉलेज में. सो आई होप हर्षल आपको आंसर मिला होगा. बस थोड़ा सा और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी. और मैम स्टूडेंट्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन भी रहती है. काफी स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ कुछ अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी, नॉलेज भी सब बढ़ता है उससे. नॉलेज भी बढ़ता है एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ पीपल यू विल मीट. आपको मतलब एक वो जो चैलेंज है ना, जो आपको कॉम्पिटिटिवनेस है, वो आपका बरकरार रहता है. सीए में क्या है, थोड़ा पैसिव यस लाइफ है. मैम. कोचिंग जाओ, ऑफिस जाओ. अगर आर्टिकलशिप है, नहीं तो इंटरमीडिएट है तो कोई ऑफिस भी नहीं है. कोचिंग से घर, घर से कोचिंग. सिर्फ वही जो है एक छोटी सी आपकी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो मेंढक का कुआं, उसको लगता है वही वर्ल्ड है. तो अपन भी कहीं ना कहीं सीए की जर्नी में कुएं के मेंढक बन जाते हैं. बट व्हेन यू विल गो आउट देयर एंड यू विल सी पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, दे हैव सो मच ऑफ एक्सपोजर. थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ जी भाई, कोचिंग भी ऑनलाइन अब. एग्जैक्टली. तो मतलब वो अगर मतलब विद ऑनलाइन कोचिंग, आई थिंक इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू वर्क ऑन आवर सोशल स्किल्स एंड ज्वाइन रेगुलर कॉलेज. काफी अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा. बट एट द सेम टाइम, क्योंकि कॉलेज जो है ना 3 साल की कमिटमेंट है. मतलब मैं ब्लाइंड आंसर नहीं दूंगी कॉलेज सबको करना चाहिए. इफ यू आर अ पर्सन जिसको है कि नहीं, मतलब मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मैंने स्कूल लेवल में बहुत पार्टिसिपेट किया था, मेरे लिए जो है मेरा टाइम सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं फटाफट से अपना इंटरमीडिएट क्लियर करूं और जो है फटाफट से अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करूं. क्योंकि आर्टिकलशिप तो 3 साल के बाद पहले शुरू नहीं होगी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो. ठीक है. तो अगर आपको टाइम सेव करना है और आपको लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी काफी अच्छे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस. अदरवाइज 3 इयर्स के कॉलेज आपकी लाइफ के बहुत ज्यादा अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफ में. ठीक है. सो आई होप आई वाज एबल टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक आंसर. How can I connect with you for career guidance? Neelam, please text me on Telegram @Pooja Sharma. Anybody who wants to connect with me, please Telegram me, and my handle is @Pooja Sharma. ठीक है. Regarding preparing for interview and technical rounds in interview, how do I connect with you? अच्छा. ठीक है. So whosoever wants to connect with me @Pooja Sharma on Telegram, please reach out to me. And we're conducting today's last interview, that is of Lucky. लकी जो है बहुत देर से बैठे हुए हैं और लकी ने बहुत पेशेंस रखी. थैंक यू सो मच लकी फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू ऑल द इंटरव्यूज. एंड सबसे अच्छी बात, लकी का थ्रू आउट द टाइम वीडियो ऑन था. सो गुड जॉब लकी, बहुत अच्छी चीज है. सो बताइए क्या लेवल है अभी, सीए इंटरमीडिएट, फाइनल, क्या क्लियर हुआ है? आवाज नहीं आ रहा आपका लकी. Can you say something? Try removing these earphones. Yeah. Unplug them. Unplug them. Am I audible? Yes, now you're audible. There is a little problem with the mic of your ठीक है, कोई बात नहीं. तो ऐसे ही चलते हैं अपन. ठीक है. हाँ जी लकी, क्या स्टेटस अभी आपका, सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट? Ma'am, I have cleared my CA intermediate both groups in May 22. Okay. But due College to my वगैरह? accident, no ma'am. हाँ.
After completing orientation and ITT in September, I met an accident because of which I was unable to join the articleship. But now I am fully recovered, so now I want to join the articleship. I'm so sorry to hear about your accident. I hope you fully recovered. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया. तो कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं लकी आप? Ma'am, KPMG. KPMG, what a beautiful choice. Full form बताना KPMG की. Ma'am, Cleanweld, Pete Marwick, Godler. क्या बात है, बहुत बढ़िया. फर्स्ट टाइम किसी ने एकदम करेक्टली फर्स्ट टाइम में बता दिया. अदरवाइज आई ऑलवेज हैव टू टेल, लर्न कर कर आओ KPMG की फुल फॉर्म. गुड जॉब लकी. सामने तो नहीं खोला हुआ ना इंटरनेट? मैम वो सामने लिखा हुआ है. चलो कोई बात नहीं. अच्छा, कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं आप? मैम स्टैट ऑडिट. स्टार्ट ऑडिट. स्टार्ट ऑडिट इतना इतना प्यार है ना स्टार्ट ऑडिट से सीए स्टूडेंट्स को. होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है. तभी तो हम ईवाई या पीडब्ल्यूसी बोलते हैं. वेरी गुड हर्षल. केपीएमजी का फुल फॉर्म नहीं बताना, इसलिए ईवाई और पीडब्ल्यूसी. ईवाई और पीडब्ल्यूसी की फुल फॉर्म बताना जरा हर्षल चैट में. दोनों की पता है कि नहीं पता? चलो लकी बात करते हैं. हाय लकी, हाउ आर यू डूइंग? Ma'am, I'm doing great. What about you? I'm also doing well, thank you so much. Can you tell me something that is not there on your resume? Okay, ma'am. So I have joined after my CA intermediate, I have joined an internship with Solvited Private Limited, where our team was assigned to solve and represent some questions on behalf of our client Byju's, where I learned how to work under a team. Okay. That's not mentioned in your resume? Yes, ma'am, that is not mentioned. Okay. Right. Could you tell me about your strengths and weaknesses? Okay. So talking about my strengths, honesty is my biggest strength. Being honest with myself and being honest with my team. So when I was doing the internship, I was provided with physics questions first. So being very honest with my team leader, I have told him that I have from commerce background, so I cannot solve it. So she gave me questions which are basic questions of physics, and I was very good at solving it. And talking about my weakness, it is managing the time prioritization of work. So I'm working on it, and for which I have started making do-to task lists. And as my New Year resolution, I have also started writing diary. You've started journaling? No, putting down whatever Oh. I have learned in a day on diary. All right. So, Lucky, tell me, why did you choose CA? Ma'am, I'm from a commerce background in 11th and 12th, after which I had a choice to go with CA, CS or CMA. CA is the most respected course in commerce, and the subjects such as accounting, maths that I already studied, and I was good at that. And I thought that accounting, maths, these are all very easy subjects. But in CA, people say that it is very hard to do. So I want to find out what is such hard in CA that people cannot clear. The subjects are same as they were in 11th and 12th, that were very easy. How has the experience been so far? Ma'am, the subjects are same, but syllabus is very vast, because of which we cannot cover all the things. Would you agree with the notion that yes, CA is hard and not everybody can clear it? No, it is not hard, but basically the length of the syllabus makes it hard. So basically you can say that it is hard. Okay. All right. All right. So where do you see yourself 5 years down the line? I see myself after 5 years that I have cleared CA and learned a lot of things and on day-to-day basis and application of that. I have kind of person that who not thinks a lot about future, but knows what I have to do next. I always focus on my next step rather than focusing on future. I had some goals which I have to accomplish, short-term goals, but no long-term goals as such.
but isn't it wise to plan for the future, for the long term, right? Ma'am, I have some startup ideas, but I have to learn a lot of things which will make me to start that idea. So I want to learn that things, and when I decide that I am done with learning, then I will go with business, starting my own business. Then I think investing in you won't be a very wise decision, since you've already decided to, start your own startup. Then I should rather invest in somebody who would, be associated with my company for at least next coming 10 years. When starting own business is not, it is something which will go parallel. First, my first priority will be my job, because I am more interested in knowing different kinds of business. So that's why I've chosen stat audit, and being very Okay. capable. We'll continue it. Okay, which brings me to the next question. What interests you about stat audit the most? Ma'am, stat audit is something in which we have to deal with financial statement of different types of company, which help us to know how different types of businesses work, what are the processes, how a manufacturing company works, and how all the processes are there, which help us to understand the business. And by seeing a financial statement of the company, we can know how business is working. Okay. All right. So a couple of technical questions here. Can you explain the LFS case to me? IFRS. ILNFS case. I, ILNFS case. Yeah. The scam that was recently in the news. I couldn't remember it for now, but I am sure I will surely go through it after the interview. Okay, okay. Uh, Caro 22 versus Caro 2020 versus Caro 2016. What were the major differences? Caro 2020 talks discuss more about things such as for loans and advances. Uh, there were less things asked in Caro 2016, but Caro 2020 focuses more and bring more information about that. Other It than this? is some. There are also some added points in others such as fixed asset inventory. Hmm. Okay. Um, Explain India's 109 to me. I have not studied Index 109 till yet. Do you I'll have go through it experience after of the working with Excel? Excel. So I've been using Excel. Uh, I was using the formula like sum if, VLOOKUP. Do you know how to use VLOOKUP? Yes, ma'am. Okay, tell me the use case of VLOOKUP, So and tell me suppose, the explain the function or formula also to me. ma'am, VLOOKUP stands for vertical look. So if there is some information that we are looking for a row, so we can search that. So basically, we can take an example like the student marks of student. So there is written a name. First column is of student name, and the rest are of marks in different kinds of subject. Okay. So if we want to know marks of Ramesh in all marks of Ramesh, so we will put the formula Ramesh, select the row of information which we want to know, such as marks in English, and we can run the formula by using it. Are you sure VLOOKUP will be helpful here or pivot will be helpful here? If we want to know only about a particular subject, a particular row, then VLOOKUP will be helpful. Okay, okay, all right. Um, do you know how to perform variance analysis and ratio analysis? Ratio analysis and variance analysis. Yeah, I don't know about it. okay. I have not revised it yet. No, no problem, no problem. What is materiality? Materiality is basically an amount which can affect the economic decision of a user. That's all? User of financial statement, you can say, for more. Okay, all right. Uh,
Great. That's all from my side. Lucky, do you have any questions for me? Yes, ma'am. I want to ask that what points you want to tell. What do you expect from a first year article? Well, the expectations are not much, but certainly will be to complete all the work that has been given to you on time, deliver everything on time, and especially assist your seniors, learn from them. It'll be first year will be a great learning opportunity for you. So make the best use of it. People are not that serious in the first year. So if you're more serious and learn from try to learn from your seniors, you'll definitely be way ahead than your colleagues. Thank you. बहुत बढ़िया, वेरी गुड लकी, वेरी गुड. क्या बात है. रिवाइज नहीं करा था लकी ने सिलेबस, नहीं बट कोई बात नहीं, करा था. मैम, मैम मतलब जितना रिवाइज किया था 80% और 20% जो लेफ्ट किया था, हाँ. आपने पूरा 20% से ही पूछा. ऐसे ही होता है. तो आईसीआई और इंटरव्यूअर में क्या ही कमी है फिर. आईसीआई भी तो यही करता है अपना, है ना. एक्चुअली आईसीआई अभी तुम चुन चुन के जो टॉपिक छोड़ के जाओगे, ऐसे बोला इसी में से क्वेश्चन पूछने का है मेरे को. तो सेम वे इंटरव्यूअर के साथ भी ऐसा ही होने का. ठीक है. तो लकी ओवरऑल मैं बोलूंगी आपके कॉन्फिडेंस में देखो कमी नहीं है एज सच, बट आपके आंसर्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं. ठीक है. आपका स्टार्टिंग मेरे को इंट्रोडक्शन तो मैंने देखो सुना नहीं था, क्योंकि मैंने थोड़ा ट्रिक कर दिया था आपको. बाकी आपने अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे में क्यों नहीं डाला है? आई मीन आई एम मैम क्यूरियस टू नो क्योंकि दैट. मैम उसको अगर कोई पॉइंट ऐसा पूछे कि व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे, तो मैम उस पॉइंट के लिए मैंने इंटर्नशिप को नहीं डाला है. और वो एक्सपीरियंस रिलेटेड नहीं है, मतलब ऑडिटिंग की फील्ड से. इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसलिए एक्सपीरियंस सेक्शन में भी उसको नहीं फील किया जा सकता. इसलिए ठीक है, ठीक है. नहीं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पे डाल सकते थे आप. अगर तो आपके रिज्यूमे में और स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स नहीं है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो. अगर आपके रिज्यूमे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये आंसर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका. मैं बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर बताती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी आपने बोला, ऑनेस्टी आपकी स्ट्रेंथ है. ये जो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, इसमें 100% ऑनेस्टी चलती नहीं है. यहाँ पर सब डिप्लोमेसी खेलते हैं. ठीक है. एंड इफ यू आर टेलिंग कि आपने जो एग्जाम्पल भी दिया, यू आर वेरी स्वीट राइट टू शेयर दैट, बट इंटरव्यूअर के सामने ना अपन उसको शेयर करेंगे तो थोड़ा सा बैकफायर कर जाएगा. कि जो है आप तो एज इट इज जो भी सिचुएशन होगा वो क्लाइंट को आप बता देंगे. दैट डजंट साउंड वेरी गुड. So try to come up with a different strength. You can talk about, my ability to focus, matlab my ability to focus deeply on things. That's one of my strengths. Or you can talk about my ability to multitask. different types of strengths हैं. आप वो figure out करो कि आपका strength क्या है. Weakness में managing time and prioritizing work. कोई भी अगर आपको जॉब देगा वो सबसे पहले यही बोलेगा, भाई सबसे पहले बंदे की स्ट्रेंथ ही यही होनी चाहिए, राइट. आपने उसको पहली बात तो वीकनेस में काउंट करा, फिर आपने बोला कि आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो. बट आई बिलीव आपकी जो वीकनेस है ना वो थोड़ी डिप्लोमेटिक होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स यूजुअली लोग बोलते हैं, विच इज समथिंग कि जो इस पे काम करा जा सकता है कि 2 महीने 3 महीने में इम्प्रूव हो सकता है. बट मैनेजिंग टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग वर्क, वो तो ऐसी चीजें जो इम्प्रूव ही तभी होगी जब आपको काम मिलेगा. एंड आई बिलीव यू वर नॉट वर्किंग बिफोर, राइट. यू आर अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप, तो वो तो इम्प्रूव तभी होगा. मतलब यानी इट गिव्स मी एन इम्प्रेशन दैट आई हैव टू वर्क अपॉन यू अ लॉट. तो आपका जो चांस है ना सिलेक्शन का, वो ऑलरेडी कम हो जाएगा. कि मुझे जहां पे दिख रहा है ऐसा कैंडिडेट पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आई वोंट सेलेक्ट यू. आई हैव सो मेनी अदर कैंडिडेट्स, राइट, जो ऑलरेडी मतलब काफी डेडिकेटेड हैं, जो अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं. सो दोनों चेंज करना है. स्ट्रेंथ भी चेंज करना है, वीकनेस भी चेंज करना है. वीकनेस में हम डिप्लोमेटिकली कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैं यूजुअली क्या बताती हूँ, आप बोल सकते हो. मैं यूजुअली बताती हूँ कि एट टाइम्स आई गेट सो एनग्रॉस्ड इन वर्क दैट आई फॉरगेट ईटिंग एंड इट अफेक्ट्स माय हेल्थ. कहने को तो देखो है वीकनेस ये, बट इट डजंट लुक लाइक अ वीकनेस. मुझे तो लगता है भाई सही है, हमारा तो काम चाहिए, हमें तो ऐसे ही बंदे चाहिए जो काम करे, जिन्हें ना खाने का होश हो ना पीने का होश हो. ठीक है. तो वो चीज है. एंड सेकेंडली और क्या क्या वीकनेस आप बता सकते हो. कम्युनिकेशन स्किल बता सकते हो कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक फोरम्स. ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगी अगर आपने ये नहीं करा है तो झूठ नहीं बोलना है, बट ट्राई टू कम अप विद समथिंग दैट डजंट लुक लाइक अ वीकनेस. ठीक है ना.
देन वाई CA, आई थिंक ये वाला आंसर में भी आप इम्प्रूव कर सकते हो कि कॉमर्स है, कॉमर्स में सबसे अच्छा ये है। थोड़ा सा स्टोरी बिल्डिंग करो, हाउ यू वर इंट्रोड्यूस टू दिस कोर्स, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। सिर्फ ये एक मोटिवेशन की सब लोग मुश्किल बोलते हैं, मेरे को भी देखना है कि ये कितना मुश्किल है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड रीजन टू इन्वेस्ट योर नेक्स्ट 5 to 6 years। 5 से 6 साल बहुत, अगर कोई मतलब डीप इंटरेस्ट होना चाहिए तभी बंदा अपने 5 से 6 साल लगाने के लिए रेडी होगा। नॉट जस्ट टू कि भाई हाँ आई जस्ट वांट टू सी लाइक व्हाट चैलेंज लाइज अहेड, राइट। सो ट्राई टू कम अप विद अ स्टोरी दैट यू कैन रिलेट मोर टू। ठीक है, थोड़ा सा कि मेरा कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मुझे कैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कैसे जो है what help did I take to know more about the course, मैंने अपने टीचर से काउंसिल किया या फिर मैंने अपने मेंटोर से काउंसिल करा, and then I finally decide that I must go for it. It's such a renowned course across India. The amount of respect that qualified CA get in the society, it's amazing, and not just respect but also it's such a great opportunity to excel in career in general. ठीक है, so the pinnacle that I can reach while pursuing chartered accountancy or after qualifying, I think that's amazing. That's a great like uplifter for me. तो ऐसे से आप थोड़ा सा स्टोरी बिल्डिंग कर सकते हो। गोल्स आई थिंक अगेन वो स्टार्टअप वाला पॉइंट प्लग इन करके, चाहे कितना ही हमें भी पता है हम 3 साल के बाद नहीं रुकने वाले हैं इस कंपनी में। मतलब ये तो जो इंटरव्यू ले रहा है ना, कसम से बता रही हूँ, उसे भी पता है कि भाई ये नहीं रुकेंगे, हर कोई स्विच मारता ही है। ठीक है, बट स्टिल हमें सामने से नहीं बोलना, हमें तो यही दिखाना है, हमें तो 3 साल यहाँ पे काम करना है, हमें तो क्वालिफाई हो करने के बाद भी हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि हम यहीं पर काम करें। ठीक है ना, तो डू नॉट प्लग इन योर स्टार्टअप वाला पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आप अपना बना सकते हो। शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली कि आई वांट टू लर्न अबाउट माय फील्ड, एक्सप्लोर करना है मेरे डोमेन को, स्टार्ट ऑडिट को। एंड लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली टू क्वालिफाई एज अ CA, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग देन डेफिनेटली climb the hierarchical ladder and take managerial position in the organization so that I can also lead a team, add value, teach them also while delivering value to my clients, and helping my company also bring in more clients and increase the revenue। ऐसे ऐसे करके आप चीजें बोल सकते हो। Ma'am, हाँ जी। ma'am, so we cannot be 100% honest in our interview. No, we cannot be. I'm sorry to say this, but we cannot be. I know this is a very harsh reality, but we cannot be. ठीक है, there are people who do that, but I mean फिर उनके सिलेक्शन के चांसेस भी तो बड़े कम है ना। आप सोचो, हमें हमें इंटरव्यूअर को वही बोलना है जो वो सुनना चाहता है अगर हमें सेलेक्ट होना है तो। या तो आप अपनी ऑनेस्टी देखो या फिर आप ये देखो कि मुझे सेलेक्ट होना है। ठीक है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बस फिर थोड़ा सा फिर वही उसी हिसाब से आंसर फ्रेम करेंगे जो वो सुनना चाहता है। ठीक है, राइट। ये वाई स्टार्ट ऑडिट, आई थिंक हाँ इस वाले आंसर पे थोड़ा सा आप और इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनीज और उनके बारे में जो है उनके बिजनेस मॉडल्स, उनका जो है द स्टेक होल्डर्स, उन सब के बारे में थोड़ा और होलिस्टिक आंसर बना सकते थे। बाकी ऐसा आंसर में कोई कमी नहीं थी। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी नहीं आई थिंक प्रिपेयर किया है, और पढ़ाई वाला तो थोड़ा सा कमी लगी ही मुझे वहां पर। ठीक है, Currently, my BCom exams are also going on. That's why अच्छा, I was not able to revise it. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं ना, अब इंटरव्यू की कॉल्स आनी तो शुरू हो ही जाएंगी। मैम, एप्टीट्यूड टेस्ट अभी दे दिया है KPMG का। अच्छा, दे दिया है, बहुत बढ़िया, होपफुली क्लियर हो जाए। तो अब जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दो, कभी भी कॉल आ सकता है फिर तो। ठीक है ना, Thank you for all of your suggestion. थैंक यू सो मच लकी फॉर ज्वाइनिंग। करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें? करंट अफेयर्स देखो, न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे पढ़ना ही होगा। ठीक है, बट ये 2-4 केसेस हैं जो अपने फाइनेंस के हैं। एक ILNFS वाला है, एक अपना नीरव मोदी वाला है, राइट, एक अपना सत्यम वाला है। तो ये सारी तो जो फेमस है ना अपने स्कैम्स हैं, इनको तो पढ़ के ही जाओ। मतलब ये चाहे अभी न्यूज में नहीं भी है तब भी इनको पढ़कर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। अदर देन दैट डेली बेसिस पे आप न्यूज पढ़ोगे, UPI काफी ट्रेंडिंग है, चैट GPT काफी ट्रेंडिंग है, आपका AI मशीन लर्निंग काफी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए। फिर अभी हाल ही में ये स्प्लिट जो है EY स्प्लिट वगैरह हुआ था,
होना था, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे न्यूज, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली, हर्षल इज राइट, क्रिप्टो इज सो ट्रेंडिंग, यूपीआई इज सो ट्रेंडिंग, ये सारी चीजें ट्रेंडिंग है। तो आप कोई भी न्यूज फॉलो करिए, ठीक है, आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ब्रश योरसेल्फ अप टू दी करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड ऑन दैट नोट फाइनली, आज कल भी जो हमें 11 बज गए थे, आज भी ऑलमोस्ट 11 बजा ही दिया आप लोगों ने। ठीक है, छोड़ते ही नहीं हो हमें। Sachin, do you have a doubt, because we're closing the session, or do you want to come for the mock interview? Mock interview or doubt? Hello. Anji. Yeah, I am Sachin Kumar. I am a final year student of Become Honors. Anji. So I have a doubt regarding, like, I applied for tax analyst in EY, and I cleared my aptitude test, and my interview will schedule on 15th January. Okay. So what what they will ask in technical interview? You applied for stat audit or RAS? No, tax analyst. Tax analyst. So tax के point of view से, see, you'll have to study important sections of tax, right? आपने बीकॉम कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, राइट? तो टैक्स से रिलेटेड, आपका इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ये जो हमारे टीडीएस से रिलेटेड सेक्शंस हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है 44AB, 44AD, 44ADA, ठीक है, 44A AA, ये सारे क्वेश्चंस है। फिर टीडीएस में से जो है 194Q वाला सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। और लेटेस्ट जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं, मतलब शेयर और म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या आपकी डेट है, टैक्स लैब जो है वो आपको जरूर पढ़कर जाने चाहिए, टैक्स लैब, राइट? एंड सिंस आप एनालिस्ट के रोल पे अप्लाई कर रहे हैं, सो एनालिस्ट के रोल पे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको अपने एचआर राउंड के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, प्लस बिट ऑफ नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंट टैक्सेशन सेक्शन। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आई थिंक इतना भी आप प्रिपेयर करेंगे, यू विल बी मोर देन इनफ, एंड यू विल बी एबल टू बस कॉन्फिडेंटली बोलना है इंटरव्यूअर के सामने, और अच्छा हो जाएगा इंटरव्यू आपका। ठीक है, चलो, on that note, let's close this session. I really hope आप सबको मजा आया होगा। और next session जो है अभी हम decide करेंगे, Miss Wish on YouTube. We'll definitely plan the next session. थोड़ा अभी बैठ के देखते हैं क्या क्या हमारे चीजें पेंडिंग पड़ी हैं, and then we'll definitely plan, and accordingly we'll be rolling that out on our social media, so you can get some information from there. Hi Darpan, we're closing the session for now. If you want to connect with me, please ओके, जिनको अपना रेज्यूमे सेंड करना है, प्लीज सेंड ऑन connect@thinkingbridge.in, राइट? एंड माय टेलीग्राम हैंडल इज Pooja Sharma, for those who are asking. Okay, I'm sending here, and the email ID also. दोनों चीजें मैंने चैट पे सेंड कर दी है, फटाफट से आप उनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड बिकॉज अभी हम जब सेशन क्लोज कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा प्लीज चैट में बताते जाइए, सो दैट हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, राइट? थैंक यू सो मच विजेता। डेफिनेटली सारे आंसर्स पे वर्क करना है जो हमारा डिस्कशन हुआ है, ठीक है विजेता? और अच्छे से देना है आपको तो इंटरव्यू स्पेसिफिकली, ठीक है, राइट? All right, good night guys, thank you so much, it was a lovely experience with you all, and all the best। जिसके भी इंटरव्यूज होने वाले हैं या भाई कॉल आने वाला है, तो आई रियली होप आप सबको जो है बेस्ट से बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट मिले, राइट? थैंक